जय गुरु। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना अपनी संगत में जोड़ने के लिए, हम सबको आज फिर से इस गुरु परिवार को एक साथ जोड़ने के लिए। और जैसा अभी अंकल आपने कहा बिल्कुल ठीक कि गुरु जी उन सब लोगों को सन्मति दें जो ये गलत रास्ते पे चलने की गलत बुद्धि उनके दिमाग में आ रही है, और बाकी संगत से भी हाथ जोड़ के ये विनती है कि हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बन चुकी है कि हम इस गुरु परिवार के प्रति। जय गुरु जी आंटी, सॉरी टू इंटरप्ट यू आर नॉट ऑडिबल। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे या माइक नजदीक लेके आएंगे। अब आ रही है वॉइस? हेलो, जय गुरु जी। यस, नाउ यू आर ऑडिबल। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, आज फिर से इस गुरु परिवार को ब्लेस करने के लिए और सबको आपकी छत्र छाया में बिठाने के लिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा अनिल अंकल कि ये हम सबकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है, क्योंकि मन बहुत दुखता है, चाहे हमने गुरु जी को देखा या नहीं देखा, मगर हम सब ब्लेस्ड गुरु जी के परिवार के बच्चे हैं। और कहीं पर भी हमसे कोई भी ऐसी त्रुटि हो जाए जिसमें हमें कुछ ऐसा गलत हो जाए या हम किसी से गलत होते हुए देखें, तो गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना है कि वो ये सब सन्मति सबको दे कि ऐसा कुछ गलत फिर से कभी ना हो किसी भी इंसान से। गुरुजी की मर्यादा में कोई भी गलती फिर से ना हो, सबको ये सद्बुद्धि मिले। और सभी संगत से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज गुरुजी के स्वरूप को स्वरूप ही रहने दे, वो बहुत ही प्यारा स्वरूप है, हम उसके ऊपर जय गुरुजी लिखें या कुछ भी लिखें वो सही नहीं है हमारे लिए। जिस तरह हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट रखनी चाहिए हमें, वैसे ही हम करें तो हमारे लिए सबके लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम किसी भी एंगल से गुरुजी को कष्ट ना दें, गुरुजी को दुख ना दें, आंटी यही आपकी सबसे आवाज प्रार्थना। ब्रेक हो रही थी। आप अभी आप कंटिन्यू करिए, बीच में ब्रेक हो रही थी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं गीना सिंह आंटी जी को इनवाइट करूंगी। गीना सिंह आंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्लावर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड सेशन में। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म पर। और संगत जी, आज जो चैप्टर्स हम रीड करेंगे कमलेश मेहता आंटी जी की बुक के, उनके टॉपिक्स हैं पॉजिटिव एटीट्यूड इज एन एडवांटेज एंड सेकंड इज लस्सी प्रसाद। ओवर टू यू गीना सिंह आंटी जी। जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी संगत जी। I don't know if I'm worthy of this seva. Guruji Maharaj has been very kind to have given me this opportunity. I shall read the beautiful thoughts penned down by our respected Kamlesh Mehta Aunty in her book, The Flowers of Gratitude. The interpretation is solely mine. Please excuse if I falter. Without further ado, I begin the reading of the chapter Positive Attitude is an Advantage. इसको अगर हिंदी में कहा जाए तो पॉजिटिव मनोदृष्टि रखना लाभदायक होता है। Aunty has begun her chapter with a quote from Walt Whitman, which says, "Keep your face always towards the sunshine. The shadows will fall behind you." Meaning, forge ahead and don't indulge in the negatives of the past and present. अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और अच्छी सोच रखें, अच्छा ही होगा। Very beautifully penned down by Aunty. She starts with saying, we all talk about a positive attitude, but we hardly know what a positive attitude can bring to our life. Your positive attitude can change your life and destiny forever. This is my take on this strong attitudinal trait. I learned it from my Guruji Maharaj to be positive in all kinds of situations in life. What a beautiful message given by Aunty, which she got from Guruji. गुरु की रजा में रह के ही हम खुश रह सकते हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो गुरुजी हमारे साथ रहेंगे और गुरुजी हमें गाइड करते रहेंगे। A positive attitude, she says, is not just about sporting a smile. It is about maintaining an optimistic attitude and mindset.
It is about your attitude in the utmost chaos. Just like a good or a bad diet can affect your body, positive and negative thoughts also do the same to your mind. So feed your mind with positive thoughts and amazing changes around you. So saying so, Aunty means to say that you have to remain positive. And just as food is, good and bad for us, वैसे ही हमारी जो सोच है वो एक, हम उसको अच्छी तरह भी सोच के पॉजिटिव रह सकते हैं, और अगर हम हमेशा क्रिप करेंगे या हमेशा हम गलतियां ही ढूंढेंगे या हमेशा हम कंप्लेन ही करते रहेंगे तो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। तो डोंट लिसन टू अदर्स, जैसे गुरुजी महाराज भी कहते होते थे कि दूसरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ। जो भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ डायरेक्ट कनेक्शन बनान, निंदा चुगली ना करो किसी दी। So these are very beautiful words penned down by Aunty, that remain positive in life and do good things and do good deeds in life. She says, when you start thinking optimistically, your mind gets clear of any negative thoughts and you can see the world in a new light. Very soon you will stop blaming yourself or others. You will be in total control of your emotions. So it's important to try and seek valuable lessons in every setback and experience. What she means here is, सब कर्मा दा ही खेल है, तो किसी को ब्लेम करना कोई अच्छी बात नहीं, या किसी के ऊपर ये ब्लेम करके ये सोचना कि उन्होंने ये ऐसा करा तो मेरे साथ ऐसा हुआ, ये गलत है। जब हम ये चीज समझ जाएंगे कि जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है वो हमारी कर्मों की वजह से हो रहा है, तो हमें अंदरूनी शांति मिलेगी, हमें समझ में आएगा और हम ये क्रिटिसिज्म से बाहर निकल जाएंगे। She says, a positive attitude is known to be linked with a feeling of happiness. But what is happiness? Happiness is a state of mind that comes from within, and it is not dependent on external factors. When you think positively, you will be in a state of harmony and happiness. So with a positive attitude, you can be happy right now, irrespective of any situation you are in. जो भी जिंदगी में हो रहा है उसको पॉजिटिवली लीजिए। हर चीज जो जिंदगी में होती है वो गुरु जी महाराज की रजा से ही होती है, उसमें कोई ना कोई सीख होती है, उसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है। हमें लगता है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, पर हमारे साथ बुरा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम गुरु के साथ हैं। उसमें भी कोई हमारी भलाई होगी, कुछ अच्छाई होगी। जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे उस दिन हम अंदर से पीसफुल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे और हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई देखना शुरू कर देंगे। She says, when you develop a positive attitude, you will start feeling better yourself. You will treat yourself with more respect and love. This in turn will boost your confidence levels and inner strength. You will take on new challenges and overcome your limiting beliefs. जो हमारी मनोदृष्टि है, अगर हम उसको पॉजिटिव रखते हैं तो हमारे सब काम बनने शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव रवैया रखना हो तो हमें सब चीज ये सोच के करनी चाहिए कि जो होगा अच्छा ही होगा, और जो भी हम जिंदगी में करना चाहेंगे उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। हम अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे क्योंकि हमारे जो डिसीजंस होंगे वो सही होने शुरू हो जाएंगे। She says, with positive thinking, you can achieve a motivational balance. You can learn to stay focused. As a result, you can come up with the right decisions in the most challenging situations. You can train your mind to stay positive in several ways. तो कहना चाह रही हैं कि जब हम किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, अगर हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी, वो धैर्य, वो शांति होगी
तो हम राइट डिसीजंस लेंगे और हम हमेशा फोकस्ड रहेंगे जिंदगी में, चाहे कुछ भी हमारी जिंदगी में हो। और ये कहना चाह रही हैं वो कि हम पॉजिटिव कैसे रहें। तो आंटी सेज, repeating positive affirmations is a great way to train your mind to think positively. Reading inspirational and motivational quotes daily will help you overcome the negative thoughts and instill a sense of optimism in you. Meaning, कि अगर हम अपनी positive affirmations अपने अंदर रखें, जैसे हम सब यही सोचें कि सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा, गलत हम सोचें ही ना, अपना ध्यान गुरुजी में रखें और सब कुछ सोचें कि हमारी जिंदगी में जो हो रहा है वो पॉजिटिव है, वो ठीक है, तो हम अपनी जिंदगी में एक कामनेस, एक सेंसिटिविटी और एक ऑप्टिमिज्म के साथ हम हर चैलेंजिंग टाइम्स में से हम बहुत स्मूथली निकल जाएंगे। यही गुरुजी चाहते थे और यही गुरुजी करते हैं। चाहे कितना भी कष्टदायक टाइम आए, बट गुरुजी उसको इतना सरल और इतना धैर्य से हम अपने उस कष्ट में से निकलते हैं और गुरुजी हमें जो हिम्मत देते हैं उससे हमें उस कष्ट में से निकलने में पता भी नहीं चलता कि वो कष्ट कैसे निकल जाता है। He says, whenever any unpleasant event occurs, try to approach it with a positive mindset and learn an optimistic lesson out of it. हमेशा आशावादी रहिए, कुछ भी हो जिंदगी में, कोई भी अनप्लेजेंटनेस हो जाए, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो उसमें से आप बहुत जल्दी निकल जाएंगे। He says, remember your thoughts determine your feelings and actions. So whenever any negative thoughts come to your mind, immediately replace it with a positive one. What she means is, see positivity in every event of life. हर चीज जो जिंदगी में हमारी हो रही है, अगर हम आज भी बैठ के पीछे का सोचें कि हमारी जिंदगी में क्या क्या हुआ, और अगर हम ये सोचें कि हमेशा गलत हुआ गलत हुआ गलत हुआ, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। हम ये सोचें कि अगर हमारे साथ वो हुआ तो हम उसमें से कैसे निकले। अगर हम उसमें से निकले तो ये हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ थी, एक पॉजिटिविटी थी, हमारे साथ हमारा गुरु भी था। So that will help us come out of the hurdles of life. She finishes this chapter by a quote by Epictetus. It says, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. So हमारा reaction of events in life is very important. और उसको हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है, आशावादी रहना है, निराशावादी कभी नहीं रहना है। आशावादी रहेंगे तो जिंदगी बहुत ही सरल हो जाएगी। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर चीज में कोई ना कोई भलाई होती है। जब हम गुरु को सरेंडर कर दिया तो हम अर्जी अगर डाल ही दी तो आगे गुरु की मर्जी। इफ गुड हैपन्स विद अस, इट इज गॉड्स रजा, एंड इफ बैड इज हैपनिंग, it is because of our karmas. Guruji also said no ifs and buts, means accept and move on. That is another connotation of what he says, no ifs and buts. अपने आप को accept करिए कि जो भी हो रहा है is because of the karmas and we need to move on. Everyone has a different story of life. So do not compare and find faults in yours. Situations always change. So the situations will change and learnings will help us forge ahead and help us sail through life smoothly. With this chapter ends, and turning to the next page, we have a beautiful saroop of Guru Maharaj, ever smiling and ever loving the Guru that we have. Moving on to the next narrative of Kamlesh Aunty, which is Lassi Prasad. He begins this chapter with a quote, "Blessed are those who see beautiful things in humble places where other people see nothing." तो ये क्या कहना चाह रही हैं आंटी? ये कहना चाह रही हैं कि everything is beautiful and all that matters is how we interpret it. So when you see good things in
what's happening in our lives, there will be people who will not see anything. So that needs to come from within us. अगर हम हर चीज में अच्छाई देखेंगे तो हमें अच्छा ही लगेगा, अच्छे ही डिसीजंस लिए जाएंगे और हमारी जिंदगी हमेशा अच्छी ही रहेगी. Whatever prasad Guruji gave us was always as divine as himself, whether it was Kara Prasad, Langar Prasad, Jal Prasad, and Chai Prasad. So Aunty says, what is prasad? Prasad is blessed food which is distributed to everyone and symbolizes the belief in equality and oneness of humanity. So that prasad is something which is very divine, she means, and it is for everyone, rich, poor, old, young, ailing, healthy, everyone. Prasad in Gurudwara turns to be blessed once it enters the door of the Gurudwara or any sacred place. 500 years ago, Guru Nanak Ji started Kara Prasad, which is made with 4 ingredients: wheat flour, ghee, sugar, and water. So all these things that Aunty has mentioned is something which is very, very true. And it means that prasad is something which is very divine. And Guruji has healed people with the divine prasad that he distributed. Sangatji, the 4 things that we put in the prasad are wheat flour, ghee, sugar, and water. All these 4 ingredients combine together and make it so pious and so blissful and so gratifying for us to have it because it comes from the divine, the Guru. He says all age groups enjoy the taste of it because it is smooth, soft, velvety, and rich in color. Does that mean our Guruji followed the same path which Guru Nanak Ji showed to all of us? Langar Prasad is a special spiritual prasad. It is blessed by a divine Guruji and distributed amongst each one of us. Sevadar and Sangat offer ardas to Guruji in order to get the Langar Prasad blessed. So every time when we have Langar Prasad, we must remember it comes from the Guru. The Sangat which prepares the Prasad for us first offers it to the Guru, takes Guru's blessings and prepares it for us. Sangat in millions being treated mentally, physically and medically with the help of Guruji's best Langar Prasad. So Aunty has already told us in her satsangs earlier also that Guruji had cured so many people emotionally, physically, mentally and medically with just his Langar Prasad. If that Langar Prasad, which is very simple in its menu, can do so much to us, it cannot come from anyone or from any kitchen other than the Guru's kitchen. Guruji was very fond of lassi. So she shares one anecdote with us. One of the Sangat auntie who was residing in Kishangarh was asked by Guruji to get the lassi for him every day. This was a seva which was offered to her by Guruji. It was her blessing as Guruji was removing her kasht by lassi. Guruji de apne hi tarike se lokan nu bless karenge. God knows what she got blessed with by just offering lassi to Guruji. Aunty says, one day her children troubled her a lot and it became big chaos in the house. The whole family was fighting with each other. Aunty was so fed up and said in anger, "मैं आ लस्सी दा स्यापा करवाया है, मैं दसदी हूँ." What I understood of this is that Aunty was fed up. The auntie who was given this seva of offering lassi to Guruji by the fight that happened in our house, and she was upset with her children, and she must have said it in anger, saying that मैं ए लस्सी दा स्यापा करावा ते दसदी हूँ. She went to Guruji and offered the lassi to him. Guruji didn't accept the lassi
and threw it away. Earlier, Guruji used to consume it immediately, but that day he refused. Aunty said, Guruji, lassi dawa? Guruji replied to her, मैं स्यापे वाली लस्सी नहीं पीना हाँ. That means that the Guru was aware of the bhav that she had in her mind when she got that lassi. So like earlier in the previous chapter, you have also heard that Guru te jani jaan ne. Guru Sahib nu sab pata hai, ki ho raha hai, ki keh rahe ne, ki man ch chal raha hai. So Aunty says, Sangat ji, Guruji could predict what was happening and what is happening in the universe. He is not limited by time. In fact, he is a creator of time. He used to say, I know what is happening on this side and the other side of the wall. Guruji will always guide you in the correct side of your life. So Guruji is Jani Jan, as Aunty says. He knows what is happening behind the walls, in our minds, in our hearts, in our thoughts. So there's nothing that we can hide from our Guru. He knows it all. He completes this chapter by saying, live your life for God, and God will lead your life to a world full of love and true happiness. Meaning, surrender. But how is the question? How do we surrender? By doing good karmas and leave the rest to Guruji. Do not complain, compare, or criticize. Follow the virtues taught by Guruji and life will be blissful, is what it means. So Sangat ji, I think Aunty has shared such beautiful thoughts with us in these two chapters, and which makes so much sense to all of us. Remain positive in life and do things with good bhav in your mind, in your heart for the Guru. Abide by his virtues taught and be good human beings, and always good will happen in your life. Kamlesh Aunty is a blessed Sangat and one who has been very closely connected with Guru Maharaj. So I would like to thank Aunty for giving us this beautiful book, which has her blessings, her experiences, her anecdotes, her connotations, her blissful events that happened in her life, and also good virtues that she has shared, which were taught by Guruji. So thank you, Guruji, for giving me this opportunity. And Aunty, experiences आपके होंगे, पर सीख हमारे लिए है. आपकी book के हर एक word, हर एक sentence makes so much sense to us, and we connected with Guruji by reading your book and by thinking about those beautiful moments you spent with Guruji and how Guruji passed on these messages to you. As a new Sangat, we look forward to also having you with us on this platform. All I would like to now say is कि जे मेथों कोई गलती हो गई ते मैनू माफ करना गुरुजी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. Over to the host. जय गुरुजी आंटी. बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन, जितनी जो रिक्वायर्ड थी और जो आपके आंटी भाव आ रहे थे रीडिंग में. गुरुजी बहुत शुक्राना आपका कि आज फिर हम सबने एक और स्टेप आगे लिया गुरुजी की तरफ जाने के लिए. अ पॉजिटिव एटीट्यूड विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो गुरुजी हमेशा कहते थे कि पॉजिटिव रहो और अपने दिमाग को जूतों के साथ ही जाकर के वहीं पर ही छोड़ करके आ जाओ. गुरुजी की कमांडमेंट्स में रहना भी कितना ज्यादा जरूरी है, और इतना ही ब्यूटीफुल आंटी आपने कहा. और जैसा कि लस्सी प्रसाद चैप्टर में हुआ कि दैट गुरुजी नोज ईच एंड एवरीथिंग. ही नोज आवर all the karmas, he knows all the ifs and buts, whatever is going on in our mind or whatever conversation we are having or whatever is there in our heart, जो कश्मकश हमारे अंदर चल रही है वो भी गुरुजी को पता होती है. तो वो अंतर्यामी नु दशा की हाल दिल था, वो वाली कहानी, वो वाली बात गुरुजी हमेशा ही सच करते हैं हम सबके साथ में. और गीना सिंह आंटी, आपकी फर्स्ट रीडिंग बट इतनी पावरफुल, इतनी
दिल को अंदर लगी पूरी की पूरी, जो वर्ड्स आपने जैसे एक्सप्लेन किए in both the languages, in English as well as in Hindi, because Hindi भी बहुत हमारे लिए जरूरी है, because some of the Sangat gets connected through the native languages only. And English is also important, as many of the Sangats are of different languages, so they use English as a common language to be the mediator language to understand completely. So बहुत बहुत शुक्राना है गीना सिंह आंटी जी आपका. कमलेश मेहता आंटी जी, if you are there, I would just like to invite you. कमलेश आंटी जी, अगर आपने किसी भी डिवाइस से लॉग इन किया हुआ है, please raise your hand. We would love to have your blessings. I don't think so. She has joined. Anybody from the Sangat would like to share something on the chapter, since it is an interactive session? So would request Sangat, you are cordially invited to share your experience on the chapter or on the previous chapters, जिन्होंने आपको कुछ भी गुरुजी की blessing feel कराई हो. Anybody from the Sangat? You can please raise your hands. Uncle, I would request you to please unmute Gina Singh aunty. She has raised her hand. Thank you so much. I would like to just say कि ये चैप्टर मेरे को आज मिला कि मैं आपके साथ शेयर करूं. एक्चुअली अगर मैं आपसे कहूं, आपको बताऊं कि ये मेरे साथ एक्चुअली में हो रहा है. जब से मैं जुड़ी हूं, देयर इज सो मच ऑफ पॉजिटिविटी इन माय लाइफ. आई एम स्टिल गोइंग थ्रू अ लिटिल टफ टाइम इन माय लाइफ, बट फिर भी पता नहीं गुरुजी कैसे, सुबह होती है, शाम होती है, कोई कष्ट भी कष्ट नहीं लग रहा. जब हम उम्मीद गुरुजी से रखते हैं तो हमारे अंदर एक इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आ जाती है कि हमें लगता है कि हाँ, कुछ है. गुरुजी इज थिंकिंग अबाउट अस. गुरुजी इज गोइंग टू डू समथिंग मच बेटर देन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. और ये सिर्फ अपनी सोच नहीं है, बट जब हम सत्संग सुनते हैं तो उसमें से भी हमें मैसेजेस ऐसे ही मिलते हैं कि हम, गुरुजी कहते हैं, मन्नो पर मंगो नहीं. पर हम जब मांगते हैं तो हम हमारी बहुत ही छोटी सोच होती है. हम बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स के लिए हम लुक अप करते हैं. बट आई थिंक देयर आर बिगर गोल्स व्हिच गुरुजी हैज फॉर अस टू अचीव. मालूम नहीं ये मेरे अंदर क्यों है, बट दिस पॉजिटिविटी हैज सेट इन ऑलरेडी, एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी पॉजिटिव इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ. जैसे कोई भी कष्ट का टाइम आता है तो हम बहुत जल्दी स्कम कर जाते हैं, हम बहुत जल्दी ढेरी ढा देते हैं. हम सोचते हैं कि अब ये क्या हो गया, ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ. तो थोड़ा सा सब्र संतोख हमें रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें हम्बल रहना चाहिए. और जैसे गुरुजी कहते हैं कि मेरे नाल गल्ला करो, तो टॉक टू द गुरु. दुनिया के लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं. कोई रिश्तेदारों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने कहने का क्या फायदा. वो आपका कोई हल नहीं कर सकते. हल सिर्फ गुरु ही कर सकता है. So it is better to connect with Guru, keep him at that position that he is the only one who is going to make you sail through all tough times. He is going to guide you. He is going to reward you. Most importantly, हम बहुत मतलब कितने सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी कहते होते थे कि तुसी बड़ी छोटी चीज मांग लेंदे हो, उसे सानू मैनू देनी पै जाती है. तो मच सो के मैंने सत्संग में ये भी सुना कि हम जो एक नेगेटिव एटीट्यूड रख लेते हैं अंदर कि हमें यही चाहिए, यही चाहिए, हम ये नहीं सोचते कि गुरुजी ने पता नहीं हमारे लिए क्या सोचा होगा. सत्संग में मैंने ये सुना कि किसी ने बच्चा मांगा, गुरुजी ने दिया भी.
और गुरुजी ने ये भी कहा कि इस इतने सालों के बाद ये मैं वापस ले लूंगा, या ये इतने सालों तक ही आपके पास रहेगा। तो ऐसी चीज हम मांगे ही क्यों जो हमें गुरु देना ही नहीं चाहता? और हम मांगे भी क्यों? क्या अगर हमारा गुरु हमें जानता है, हमारे थॉट्स पढ़ सकता है, हमारे कर्मास को जानता है, पिछले जन्मों के, इस जन्म के, तो गुरु से ऊपर तो कोई भी नहीं। गुरु ही हमें बताता है कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या हमें मिलना चाहिए और कितना मिलना चाहिए। ये दुनियावी चीजों की तो कोई लिमिट ही नहीं है। दिस इज लिमिटलेस। वी जस्ट वांट cars and homes and money and happiness and everything, if we don't realize there's something beyond that also. To connect with Guruji is something which I think is the need of the hour. We are all going through tough times. नानक दुखिया सब संसार, किसे नो कोई रोग है, किसे नो कोई प्रॉब्लम है। ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ निंदा, चुगली, क्रिटिसाइज, कंडेम किसी को ना करें। सिर्फ ये सोचें कि अच्छे कर्म करो, अच्छे सोच रखो। पॉजिटिव एटीट्यूड जब तक हमारा रहेगा, हमारी मनोदृष्टि जब तक साफ, स्पष्ट और सही नहीं होगी ना, हमें जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। हम वहीं रोते रहेंगे, हम वहीं चक्की पीसते रहेंगे, हम वहीं स्थिर हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा। So keeping all this in mind, I think I would request all the संगत to हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Siba aunty has raised her hand. अंकल इनको अनम्यूट करें। जय गुरु जी। सब संगत को, कैन यू हेयर मी? Yes, we can. ओके ओके। अभी गीना सिंह आंटी ने बहुत अच्छा बोला, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है, और ये मैंने गुरु जी की जर्नी में सीखा है। I was not like that. As the statement is, the glass is full or the glass is half empty, it has the same meaning, but there is a very दोनों में कितना स्टेटमेंट्स में डिफरेंस है, हमारे एटीट्यूड शो करता है। तो हमको गुरुजी की जर्नी में पॉजिटिव गुरुजी हमको बनाते हैं, बिकॉज व्हेन वी नो दैट महाशिव इज विद अस, सो हमको नेगेटिव थॉट्स लानी ही नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति हमारे साथ है जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, ही नोज इट, एंड व्हेन वी रिमेन पॉजिटिव, ही रिस्पॉन्ड्स टू अस and works for all of us. ये मैंने नोट करा है। अगर हम नेगेटिव थॉट्स रखेंगे तो इवन गुरुजी will not work for us, because सारा entire universe, when we think positively, our message goes to the universe, and universe works for us. So this is my take, and we should focus our thoughts and remain under control, ताकि हमारे अंदर negativity नहीं आए। And another thing, I have understood that there is nothing wrong. अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो nothing wrong in falling. We all fall, but do not get crushed, not to hate, complain or being negative to God. कि हमारा काम नहीं हो रहा है, हमें complain नहीं करना है, and rise above the situation. And with grace, and with Guruji's grace, we will succeed in our life. And we should not get tormented by negativity कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ ठीक नहीं हो रहा है, और ये हम सबके साथ हो रहा है। We are going through our pains, and all of us are going, and I feel that Guruji changes your mindset. हर सांस का गुरुजी के लिए शुक्राना है कि हम सुबह उठते हैं और हम सांस ले रहे हैं और हम इस कोविड से बचे हुए हैं। तो ये इसका हमें शुक्राना है, ना कि हमें अपनी नेगेटिव थॉट्स लानी है। एंड हमको अनदर थिंग आई हैव अंडरस्टूड दैट इफ वी लिव इन नेगेटिविटी,
or in guilt or in jealousy, then the hell is on the earth. We are living in hell. So we have to develop a positive attitude and accept the flow of life and living life every moment. Life is short and make most of it and live every day as it was your last day. And एक और चीज मैंने बहुत ब्यूटीफुल सीखी कि लाइफ इज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर टीचर, जो पहले हमारा इम्तिहान लेते हैं फिर लेसन सिखाते हैं. तो हमारे को कोई चिंता नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि गुरुजी हमारे साथ हैं. एक बहुत बड़ी शक्ति हमारे साथ है जिसने हमारा हाथ पकड़ा है, तो हमें किसका डर है. और अपने आप को हर क्लीन करना है, माइंड से, हार्ट से, सोल से. So this was my take on today's chapter. Aunty, आपने बहुत अच्छा बोला. It is a lesson for all of us because I also have lot of lows in my life, you know, when I feel very negative. But then suddenly I realized that Guruji is with me. Why should I be negative, you know? When he can save your life, then he can remove the negativities. He can crush those negativities of our life. तो हमें जिसके नाल रब है उसे किसका डर है. So this is my take on today's chapters. Thank you very much. Very well बहुत said, बहुत Seema aunty. thanks. I just want to say one line. Dida Rab Oda Sab. That's it. अगर इतना ही हम सीख जाएं, बहुत होगा हमारी जिंदगी के लिए. Thank you so much. जय गुरु जी. Jai Guruji, any other Sangat wants to share? I think there was one other hand raised. I couldn't see the name. Will you please come again? Any other Sangat wants to share something about their own experiences?